Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I am back again with another DIY. I know how much you guys love these और क्योंकि बहुत ठंड है कराची में which usually doesn't happen. यहाँ गर्मी होती है और ठंड में भी actually गर्मी ही होती है पर इस दफ़ा actually बहुत ठंड रही है और हर विंटर में आई फील जितनी भी मेरी ब्राइड्स आती हैं जितने क्लाइंट्स होते हैं जनरली व्हेन आई मीट पीपल एवरीबडी इज़ कंप्लेनिंग अबाउट ड्राई स्किन. मेरी स्किन बहुत ऑयली है पर मेरी भी स्किन इवन आई थिंक ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन भी विंटर में ड्राइनेस का शिकार डेफिनेटली होते हैं. तो वन ऑफ माई फेवरेट अगेन DIY मास्क्स दैट आई मेक एट होम फॉर जस्ट हाइड्रेटिंग माई स्किन और उससे बहुत ही अच्छा ग्लो भी आता है, स्किन बहुत हाइड्रेटेड भी लगती है. सो आई थॉट कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए सो दैट एवरीबडी कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस एंड आई थॉट दैट आई विल शो इट टू यू गाइज. तो आज एक और लंबा दिन रहा है काम का, ब्राइड्स का और एक्सेट्रा. तो अब मेरा टाइम ये हो गया है कि मैं अपनी रूटीन करने वाली थी. तो मैंने सोचा कि और ये मैं यही करती हूँ कि मेकअप उतार के अच्छी तरीके से क्लेंस करके ये मास्क मैं लगाती हूँ और इट्स वन ऑफ दोज DIYs विंटर के जो मेरे DIYs होते हैं व्हेन एवर यू फील कि ड्राई स्किन है तो करना चाहिए. एंड आई ऑल्सो यूज दिस ऑन माई बॉडी. तो इट्स ऑल्सो रियली नाइस वे ऑफ ब्राइटनिंग द स्किन. ग्लो आती है, स्किन हाइड्रेटेड फील करती है. बहुत अच्छा इफेक्ट है इस DIY का. तो आई नो कि जब आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा. एंड आई लव कि आप सब मेरे DIYs ट्राई करके मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं. सो आई एम रियली happy and excited when that happens. So let's get started. I love the colors of my Begum Banu sweatshirt. This is actually very proud to always wear local. A designer, an artist that I really loved, and then she took out sweatshirts and I'm wearing her sweatshirt. This is not a promotion, just love the colors. So I'm going to first show you guys how I'm going to mix the mask, and then I'm also going to show you guys how I put the mask and show you my skin after the mask, which I know you guys all love doing. कुछ जब मैं नहीं लगाती DIY तो आप सब कमेंट करते हैं कि आप लगा के भी दिखाएं. So सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक प्याला जो मेरे पास यहाँ है. और the first ingredient in this mask, the secret ingredient is powdered milk. ठीक है, आप powdered milk ले सकते हैं किसी भी कंपनी का. और मैं यहाँ 1, 2, 3 चम्मच बना रही हूँ क्योंकि मैं अभी इधर आप लोगों को वीडियो पे तो ऑब्वियसली फेस पे दिखाऊंगी पर मैं थोड़ा सा अपने नेक और हैंड्स के लिए भी बनाना चाहती हूँ जो मैं बाद में I'll do it once I'm off camera. तो ये हमने 3 टीस्पून लिए हैं पाउडर्ड मिल्क के. ठीक है, इसके अंदर मैं डालूंगी 1 पूरा टीस्पून हनी. ठीक है, अगेन ऑर्गेनिक हनी ले सकें बेस्ट है. तो इसके अंदर मैं 1 टीस्पून मिला रही हूँ अपनी ऑर्गेनिक हनी, विच इज़ ऑलवेज अ लवली हाइड्रेशन की हाइड्रेटिंग काइंड ऑफ एलिमेंट. और इसके अंदर मैं मेरे पास एलोवेरा अभी आई हैडंट टेकन इट आउट फ्रॉम माई घर में जो मेरे एलोवेरा के प्लांट्स होते हैं. तो मैंने स्टोर का एलोवेरा, ये स्टोर बॉट एलोवेरा विच इज़ वाई इट हैज़ अ बिट ऑफ अ कलर, ये भी 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून ये हो गया इसके अंदर. ठीक है, फिर मैं लूँगी थोड़ी सी ग्लिसरीन, वेजिटेबल ग्लिसरीन. इसका मैं लूँगी 1 टीस्पून. वेजिटेबल ग्लिसरीन भी हमने इसमें डाल दी. ठीक है, और फिर एक और इंग्रेडिएंट is going to be, which is again another great hydrating ingredient is coconut milk. ठीक है, अब coconut milk को भी मैं 1, 2 and 3 टीस्पून्स. और आपने इसकी जो कंसिस्टेंसी रखने की मैं कोशिश करती हूँ वो पेस्ट की तरह, ज़रा थिक सा मास्क की तरह होता है, बन जाए. तो मैं अभी ये सब मिक्स करके आपको कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ. ठीक है, तो आपने ऐसे बैठा, मैं यूजुअली ये अपने बाथरूम में कर रही होती हूँ पर अब मैं यूट्यूब पे कर रही होती हूँ आप सबको दिखाने के लिए. तो आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और इसकी कंसिस्टेंसी ना थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी, जस्ट लाइक अ विल लुक अ बिट लाइक दिस. इसको मैंने मिक्स किया. ठीक है, अच्छी तरीके से. अब मैं पहले अपनी ज्वेलरी उतारूंगी.
These are my earrings by another local brand, and the ring is also by a local brand called Noho. और a lot of people ask me कि अपनी gold jewelry मैं हर जगह से लेती हूँ, पर पाकिस्तान से जहाँ से I've got some great pieces is Noho. Again, not a sponsored post, just something I like, and I know a lot of you ask. Noho official on Instagram, you can find them. Even my ring is by Noho here. So I'm going to just take that off, and I'm going to first take off my makeup quickly. So I'm just going to use a cleansing oil. In winters, guys, even people with oily skin, I feel, should use a cleansing oil. And I know a lot of you are like, don't use, especially if you have acne prone skin like me, don't use any oil that's natural because they're comedogenic. They are going to block pores, and I always end up getting like pimples, etc. whatever. So I'm just gonna go in. I always double cleanse, so मैं अभी स्किन को सारे मेकअप को थोड़ा सा मेल्ट कर रही हूँ with this step. You can see my makeup coming undone on camera. This is also my favorite part of the day. I love taking my makeup off. I like taking my makeup off more than I like putting on makeup, believe it or not, as much as you see me with makeup. One of my favorite things to do is at the end of the day, take off my makeup. So I'm just going to now micellar water use करके I'm using some Bioderma micellar water. And for everybody who's wondering कि मैं oil कौन सा use कर रही थी, I'm using the Neogen Calming Cicatrix Micellar Cleansing Oil. That was my cleansing oil, and my cleansing water is Bioderma. I know आप लोग बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप स्किन का भी ट्यूटोरियल करें, एज इन अपनी स्किन केयर का पूरी रूटीन बताएं. I use एक तो I have, of course I'm going to be sharing that as well as soon as I have a minute, but the other thing is that I constantly cycle my products. So मैं बहुत देर एक ही set of products नहीं use करती हूँ. I feel हमारी skin को आदत पड़ जाती है, then it's less effective. So I'll use something, then get off it, use something else, then get off it, and then I keep cycling my products. So I was thinking that inshallah I shall be doing like a series of skincare posts where I will talk about my skincare. If you want to see that, please comment below. The more people that comment, the quicker I shall make that video. If you guys are interested, ठीक है? तो मैं अच्छी तरीके से अपना मेकअप अभी उतार रही हूँ. So now my makeup is completely off, and I'm going to go ahead and put this mixture on my face. Again, usually it doesn't happen on camera, but I'll quickly just show you guys. I've made enough, like I said, for my hands, for my neck. You can also put it on your body. So before I shower, I'll do that too. And इसको मैं अब पूरे face पे लगाऊंगी. And guys, you have to try this and tell me how you feel about it, because every time I give this DIY out, I know so many of the people that I've told who actually use it all the time. It also looks really nice and like glowy glass skin, but with high DIY on. तो इसको अच्छी तरीके से आप फेस पे लगा लोगे. आइडली आप नेक, चेस्ट, हाथों पे हर जगह लगा सकते हो, but obviously on camera I can't do that. So I'm just going to put an extra little layer. और इसको मैं almost about half an hour लगा के रखती हूँ इस पूरे concoction को. और उतारने से पहले it doesn't harden, but I always like to really massage whatever DIY I have on my face. So आधा घंटा मैं लगा के रखती हूँ. आप 20 minutes भी लगा सकते हैं, 15 minutes भी लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं, because nothing harmful really. Always do an allergy test though, so no matter what you put on your face, थोड़ा सा पैच अपने neck के पीछे, if you think इनमें से कोई भी ingredient आपको react कर सकता है. Coconut milk also sometimes people who have acne prone skin have to avoid. So आप उसको इस DIY से निकाल भी सकते हैं in case you don't want to. But just check before you put on your DIY. So I keep it on
also use it almost like a scrub also in the shower, although it has nothing, no scrub like quality, but I feel कि बहुत glow आती है face पर body पे. So I'm going to keep this on for about half an hour, and for 5 minutes after that, like 5 minutes is a long time. So before I take it off, मैं 5 मिनट इसको अच्छी तरीके से face पे scrub भी करती हूँ. And I feel after doing that, it makes a huge difference. So you can keep it on and then really massage it before taking it off. So let's keep it on now for half an hour. While I'll sit and do some Netflix and some Instagram, and then I'll show you what my skin looks like after. Okay, so now I've washed my face. So how do I wash it? पहले मैं damp अपना एक face towel लेती हूँ. If you guys have been following me, I always say I use face towels to remove a lot of my DIYs, makeup, etc. with my when I'm trying to remove something from my face. So मैं damp towel से मैंने उसको उतारा, wipe किया, और फिर मैंने पानी फेंका मुँह पे, and I took it off. So I have no product on right now. A lot of this shininess that you see on the screen is because on my screen and on my skin is because of the ingredients in the DIY. And if you notice, a lot of people ask me sometimes कि आपकी face पे आपने क्या लगाया हुआ है. Literally, by the way, this is the DIY right now that you guys are seeing, and the after effects of the DIY. No product. And once you guys try this at home, you will notice and you will know that I'm telling the truth, because you will see it and you'll be like, okay, हमारे मुंह पे भी यही हो रहा है. So it gives a great like kind of hydrating kind of sheen. I don't use a lot of like, especially if I'm removing a DIY. और मैंने अपना मेकअप उतार लिया था, तो मैं DIY के बाद I don't try to use like a very harsh face wash, because ये hydrating kind of a cream थी, mask था मेरे face के लिए. I don't want to remove all the good stuff by really scrubbing and using a very harsh face wash. So always say after DIYs, try to just go gentle, remove it, and then you can do the rest of your skincare on top if you wish. But this is another one of those DIYs that I do really love. I always recommend people, and if you want like some glass skin happening with the DIY at home, then this is the DIY for you. Also because a lot of you have been asking me for more DIYs, being like, okay, जो आप skin पे लगाती हैं, क्या लगाती हैं, तो मैं they're like 100 DIYs, and I'm going to keep sharing them with you. So I hope you guys like this one, and you guys will be using it. And please, when you do, comment below, go to my Instagram, tell me how you felt about the DIY. Always do a patch test before you use anything on your face. If you feel you react to any of the ingredients, you can take it out. There's no hard and fast. उसको आप बेशक निकाल लें और आप कुछ और भी अंदर डाल सकते हैं. Some people like putting rose water in the hair as well. You can go ahead and do that. Replace it with something that you feel will affect you or you will not like. So go ahead, use it, tell me how you felt about it, and then I shall be seeing you very, very soon again with another DIY. Please like, share and subscribe, guys. I can't request you guys more to subscribe to the channel. We're mashallah now growing every day. Thanks to all of you, and I want to keep bringing content to you guys that helps you. आप सबकी मदद करने वाला content जो आप I love it when people say कि आपकी videos देख के हमें कुछ सीखने को मिलता है. And that was the reason why we started the platform to begin with. So really looking forward to seeing you all try this DIY as well. Keep giving us your love, and like, share, subscribe. In the comments below, please also tell me what all you want to see otherwise as well when it comes to skincare, DIY, makeup. Looking forward to bringing you a lot of that very soon. And have a good night. Take care of yourselves. Please be safe, be home. Omicron is out and about again. Everybody I know literally has corona right now, and I have been petrified and I'm at home. But you want to make sure that you are also being super safe. Don't go out unless you really need to, and really try to lessen the socializing as much as you can. Once this is over, we shall all be out and about again. In the meantime, stay home, do a DIY, and I'll see you very soon again. Bye.